Students, when light rays go from denser to rarer, what happens? It bends away from the normal, right? Let this is water and this is air. Probably this is the normal, correct? Let the light rays incident in this direction. So it is supposed to go straight, but it will go away from the normal, correct or not? Yes, sir. And R is greater than I here, angle of refraction is greater than angle of incidence. If you will again increase, then again the angle of refraction will also increase. Do you realize, just 1 minute students. So this particular point will come, you will incident the ray, on that time it will go on the surface or not? The case will arise or not, because you are increasing angle of incidence, angle of refraction is increasing. Correct, na students? Yes, sir. So at that time angle of refraction is going to be 90 degree, na? Correct? Yes or no? Yes, sir. So for that value of critical angle, this I is known as IC, critical angle. This is known as what? Critical angle. Critical angle means that angle of incidence for which angle of refraction is how much? 90 degree. Understood? Yes, sir. That angle of refraction for which that angle of incidence. That angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree. For which angle of refraction is 90 degree. Understood, na students? Understood or not? Right? Understood critical angle, huh? Right? So if I'll take sine I by sine R, let this is mu air by mu water. Correct? So this is going to be mu air by mu water, na? Yes or no? Yes. So sine I by sine R is equal to mu air is 1 by mu. If I will take critical angle sine IC, then it is going to be sine 90, correct? That is equal to 1 by mu. So simply you can see sine 90 is 1, so sine IC is equal to 1 by mu. Hai ki nahi? So from there I could get IC is equal to sine inverse of 1 by mu, correct? Students, correct or not? Yes. Got a relation? If I'll be giving you the refractive index of the particular medium, then you can find the critical angle of that medium, correct or not? Yes. And any ray incident beyond critical angle, what happens? यहाँ पर मैंने क्या किया कि हमने यहाँ पर लिए थे मीडियम, ठीक है, और दिस इज क्रिटिकल एंगल मैंने बता दिया, दिस इज क्रिटिकल एंगल IC, so this is angle of refraction, correct है ना? This is angle of refraction, this angle is R is equal to 90 degree. Any ray incident beyond critical angle, what will happen? It will come back to the same medium. Are you getting my point or not? Yes, sir. So no more it will be getting refracted, it will be getting reflected. When light is coming back to the same medium, this phenomenon is known as what? Reflection. Understood, na? Are Yes, sir. understood or not? Yes, sir. So that concept is known as what? Total internal reflection, right? है कि नहीं? Any ray incident at an angle greater than critical angle get completely reflected back to the denser medium, correct? है कि नहीं? So you can write any ray
any ray incident at an angle greater than critical angle the ray gets completely reflected back. The ray gets completely reflected back to the denser medium, right? To the denser medium, correct? This phenomenon is called total internal reflection, right? This phenomenon is called, what is called? Total internal reflection. Understood this word? TIR, total internal reflection. Correct ना? Yes, sir. अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैंने ऐसा कुछ बताया, लेट्स टेक ए केस, एक केस लेते हैं कि ये पूरा पानी है, राइट? यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक पॉइंट सोर्स हो सकता है, एक पॉइंट ऑफ लाइट भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट ना ऑल? तो जो भी रेज जाएगा क्या होगा? बाहर की तरफ डेविएट होगा, राइट? तो एक ऐसा सिचुएशन, देयर विल बी अ सिचुएशन, राइट, जो कि इसके लिए भी एक क्रिटिकल एंगल होगा ना स्टूडेंट्स? उसी टाइम पे ये रे के ऊपर जाएगा कि नहीं? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट ऑल? Got it, sir. इसका ऐसा भी एक केस आएगा जो जितने भी रेज जा रहा है रिफ्रैक्ट होके चला जाएगा, बट ऐसा भी एक केस आएगा ना जहां पर लाइट ऑन द सरफेस जाएगा। If this is critical angle, then this is going to be also critical angle. Are you getting my point? Yes, sir. तो मतलब आप इमेजिन करो कि एक बीकर में हमने पानी रख दिया, राइट? उसके नीचे में एक लाइट सोर्स रख दिया, तो कुछ लाइट तो बाहर चले जाएंगे, कुछ लाइट ऐसे सर्कुलर फॉर्म में रहेंगे कि नहीं? ये पूरा सरफेस में इस तरह की सारे लाइट्स एक पॉइंट आएगा ना जहां पर वो सर्कुलर रहेंगे, राइट? आर यू गेटिंग और नॉट? और जो सर्कल बनेगा उसका एक रेडियस बन जाएगा, यहाँ पर रेडियस आर, और जितने हाइट पे नीचे ऑब्जेक्ट दैट इज एच। गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स? So that radius is going to be how much? No, sir, h by 1 minus mu ka whole square. Just keep this relationship in mind, right? We can do this sin I by sin r. Sin IC is equal to P by h, right? If this is r, this is h, then this is going to be r square plus h square, right? Correct or not? Sin IC by sin r is equal to mu. तो उसी रिलेशन से हमने ये निकाल दिया कि अगर हाइट पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो जितना बड़ा सर्कल बनेगा उसका रेडियस आप निकाल सकते हो। अंडरस्टूड ऑल? Yes. ये एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग पे रखो, राइट? देन प्रिज्म के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि प्रिज्म आल्सो डैजल्स, माइरेज आल्सो अकर्स, राइट? प्रिज्म आल्सो डैजल्स, माइरेज आल्सो अकर्स ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट? अंडरस्टूड ना? Yes, sir. तो अगर हम ग्लास प्रिज्म की बात करेंगे, इफ विल बी सेइंग अबाउट ग्लास प्रिज्म, राइट? तो ग्लास में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ग्लास का भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, राइट? गेटिंग और नॉट? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्टूडेंट्स? So P by 2. मतलब 1.5 अराउंड, राइट? Yes. Refractive index of glass is 3 by 2, that is near about 1.52, right? है कि नहीं? जो आप 3 by 2 बोलते थे, correct or not? If I'll be asking you what is the critical angle for glass, na, sin IC is equal to 1 by mu, correct? That is equal to 1 by 1.52, that is equal to 0.6579, correct?
तो इसे अगर c निकालेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.6579, so that will be near about students 41.14 degree. Understood the critical angle for glass? Yes, sir. तो अगर प्रिज्म में हम कहीं पे भी रे इंसिडेंट किए तो हमें पता चल जाएगा कि कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सो देन यू कैन नो वेदर इट विल रिफ्लेक्ट और वेदर इट विल रिफ्रैक्ट, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर. यहाँ पर मैंने एक प्रिज्म ले लिया, राइट? इक्विलेटरल प्रिज्म ले लिया. गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज 90, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज आल्सो 45 डिग्री. ऑल क्लियर? मैंने एक रे को यहाँ पर नॉर्मली इंसिडेंट किया. कैसे इंसिडेंट किया मैंने? नॉर्मली, राइट? If this is 45 student, this is also 45 because this is 90 degree, correct? Getting na? If this is 45, this angle is 45. So here पर angle of incidence is equal to 45 degree students, which is greater than 41.14 ना? Yes or no? Yes. So यहाँ पर रे जो होगा वो रिफ्रैक्ट होगा या रिफ्लेक्ट होगा? Any ray incident beyond critical angle returns back to the same medium. That is known as total internal reflection. Getting now? So it will reflect in this. It will reflect at the same angle. Understood? It will trace the path like this. Correct? है कि नहीं? हाँ सर. अंडरस्टूड ना? Yes, sir. कभी कभी मतलब यू विल गेट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को इस तरह भी प्लेस किया जा सकता है 90 डिग्री करके. दिस इज 90 डिग्री एग्जैक्टली, राइट? दिस इज 45 डिग्री, दिस इज आल्सो 45 डिग्री. तो अगर रे को मैंने यहाँ पर इंसिडेंट किया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सॉरी, मैं इंसिडेंट किया मतलब द रे इज लाइक दिस, करेक्ट? तो यहाँ पर जाके वो क्या करेगा, यहाँ से नॉर्मल बनाएंगे, ये भी 45 है, राइट? बिकॉज दिस इज 90 मतलब दिस इज 45, तो ये फिर 45 बन के ऐसे जाएगा, करेक्ट? अगर यहाँ पर अगर नॉर्मल बनाएंगे तो इफ दिस इज 45, दिस विल आल्सो कम इन दिस डायरेक्शन 45 डिग्री. इट विल trace a path like this. Is that clear? Yes, sir. अगर मैंने ऐसे प्रिज्म बनाया जो कि 90 तो लिया था एक एंगल, दूसरी एंगल को मैं 45 ना लेके इसको मैंने 30 डिग्री लिया, आई जस्ट टुक इट 60 डिग्री, और मैंने वहां पर भी मेरा एक नॉर्मल इंसिडेंट करवा दिया, राइट? सो नाउ से मी whether it will reflect or whether it will refract. What is angle of incidence in this case? This is to going normally, no problem. This is, if this is 30, this angle is 60 degree, na students? So this angle is 30 degree. So angle of incidence is how much? 30 degree, which is less than 41 degree, na students? Yes, sir. So it will reflect or refract? Definitely it will refract, right? Away from the normal, it will go like this. Understood or not? Understood. अगर मैं वही प्रिज्म को थोड़ा ऐसे बनाता, मैं let the prism is like this. Manaswin, are you getting? Yes, sir. This is 60 degree, this is 30 degree मैंने ले लिया, right? If this is like this, so यहाँ से अगर हमने एक normal बनाए, right? So what will happen here? If this is 60, this is going to be 30, this is going to be 60. So angle of incidence is equal to 60 degree, which is greater than 41 degree. So what will happen? It will again reflect with 60. Correct or not? Students, getting my point? In which direction the ray will trace its path? Can you determine that? Yes, sir. So you will face such type of questions, right? Understood, na?